Welcome back, students. In this lecture, we are going to discuss about the last type of the biofertilizer, that is cyanobacterial, which is algal biofertilizer. Algae as a biofertilizer, example is cyanobacteria. Cyanobacteria, it is also known as blue-green algae. It is a photoautotropic and prokaryotic in nature. अगर हम इसके बारे में देखें साइनोबैक्टीरिया, तो ये फोटोऑटोट्रॉपिक है and it is prokaryotic in nature, as it is also known as blue-green algae. These are free-living nitrogen fixers, which is also known as non-symbiotic bacteria or non-symbiotic association. मतलब यहाँ पर they can live independently, they can feed independently. So these are the free living nitrogen fixers called cyanobacteria. More than 100 species of blue green algae, they can fix the atmospheric nitrogen, and this fixation of atmospheric nitrogen takes place in the specialized cells known as heterocyst. ठीक है, तो ब्लू ग्रीन algae, अगर आप ब्लू ग्रीन algae का स्ट्रक्चर देखें, एग्जाम्पल कोई भी nostoc और anabaena, any, if you will see the structure of this anabaena or nostoc, it consists of this specialized cells which is in the circular form enlarged, and this cell is known as heterocyst. तो हेटेरोसिस्ट ये एक साइनोबैक्टीरियल सेल है दैट कैरीज आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस होती है वो होती है इस हेटेरोसिस्ट सेल में. ओके, एंड दिस इज वेरी कॉमन इन द राइस फील्ड. इट इज यूज्ड मोस्टली इन द राइस फील्ड, and there is no any use of chemical fertilizers. Inoculation of algae can result in 10 to 14% increase in the crop yields. Is when we use this cyanobacteria as a fertilizer, it increases the 10 to 14% of the crop yield. They are easy to produce. This type of biofertilizers, these are easy to produce, and their large scale production is also done in the cement tanks filled with the fresh water. No any type of processing is required. Production, or we can say the process of production, is simple and it is cheap. Cost of 10 kg this cyanobacteria biofertilizer, it may be rupees 30 to 40 only, so it is very cheap to buy. Beneficial in certain crops like vegetables, cotton, sugarcane, not only rice, but it also, this type of fertilizer, it is also used in the vegetables, cotton, sugarcane, etc. Examples of this algal biofertilizers are anabaena, nostoc and oscillatoria. These are the genus of nitrogen fixing blue green algae. इस तरीके से कुछ प्रोड्यूस होता है हमारा बायो फर्टिलाइजर ब्लू ग्रीन algae, which is helpful in the agriculture as they have the ability to fix the atmospheric nitrogen to the soil so that plants can grow properly and increase the crop yield or increase the grains yield, and this nitrogen is helpful to the crops. So this is the BGA, which is used as a biofertilizers. Now what are the methods of the production? There are generally 3 methods. Any of one we can use for the production of this cyanobacteria biofertilizer: Trough method, Peat method and field method. So we will discuss one by one each method. First is Trough method. It is also known as tank method. ठीक है, इसी को हम टैंक मेथड भी कहते हैं. तो as the name indicates, in this method trough or tank is been used,
and this method is generally, it may be used in the lab purpose. So ये जो 3 methods हमने अभी देखे, Trough and Peat method, this first 2 method are for the individual farmers, मीन्स अगर स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करना है, लैब लेवल में प्रोडक्शन करना है, वी कैन यूज दिस 2 टाइप ऑफ द मेथड, टैंक मेथड एंड पीट मेथड. बट इफ लार्ज और बल्क प्रोडक्शन करना है एट द कमर्शियल लेवल, we can use this field method and even nursery method is also been there. तो आप फील्ड मेथड या फिर नर्सरी मेथड यूज कर सकते हैं फॉर दी लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लेट्स सी अबाउट दी ट्रफ मेथड और टैंक मेथड. इन दिस मेथड जिंक एंड आयरन ट्रफ्स आर यूज्ड. सो जिंक या फिर आयरन टैंक्स यूज किए जाते हैं. डायमेंशंस होते हैं 2 into 3 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 22 सेंटीमीटर इन हाइट. तो इस डायमेंशंस का टैंक यूज किया जाता है विच इज मेड अप ऑफ जिंक एंड आयरन. दिस टैंक और ट्रफ इज फिल्ड विथ अबाउट 10 kg ऑफ सॉइल. 10 kg ऑफ सॉइल डाला जाता है उस टैंक के ऊपर एंड 200 ग्राम ऑफ सुपर फॉस्फेट इज स्प्रेड ऑन इट. तो पहले आप टैंक के ऊपर 10 kg सॉइल स्प्रेड करेंगे, उसके ऊपर आप डालेंगे सुपर फॉस्फेट. What is the role of super phosphate? It is a fertilizer made by treating phosphate rock with sulfuric और phosphoric acid. तो ये एक फर्टिलाइजर है जो it is made by treating phosphate rock with sulfuric or phosphoric acid. So it is rich in the phosphate that is known as the super phosphate. ये spread किया जाता है. Afterwards, water is poured up to 5 to 10 centimeter height and then calcium carbonate is added to maintain the pH around 7. तो calcium carbonate का role है to maintain the pH, neutral pH, and then afterwards starter culture is sprinkled over it. starter culture add किया जाता है. तो starter culture add करने के लिए उसे बनाना ज़रूरी होता है या फिर डायरेक्टली जो नर्सरी होते हैं या फिर जहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है आप डायरेक्टली वहाँ से भी स्टार्टर कल्चर ला सकते हैं. और आइदर यू कैन मेड आइदर आप लैब लेवल में भी इसे बना सकते हैं. स्टार्टर कल्चर इट इज़ मेड फ्रॉम द मदर कल्चर. मदर कल्चर को आप रिस्ट्रिक्ट करके ग्रो करके फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके स्टार्टर कल्चर बना सकते हैं. दिस स्टार्टर कल्चर, दिस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंजाई और एनी, दिस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हेल्प्स इन द बिगिनिंग ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस. ओके, सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टार्टर कल्चर. एक बार आपका स्टार्टर कल्चर तैयार हो गया, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट स्टार्टर कल्चर फॉर large scale production or directly add in the large container like fermenter. So these are the microorganisms that helps in the beginning of fermentation process. This tank is kept in the sunlight where BGA developed or where BGA is developed. sunlight में रखा जाता है. Afterwards BGA has been developed, we have to water it every day. After sufficient growth of BGA, soil is allowed to dry and this dry flakes are collected and packed for algalization. तो ये सब प्रोसेस होती है, वाटर किया जाता है एंड व्हेन सफिशिएंट ग्रोथ हम नोटिस करते हैं. सो आफ्टर दिस सफिशिएंट ग्रोथ दिस सॉइल इज अलाउड टू ड्राई which contains the BGA and the dry flakes are collected and packed for algalization. Algalization, it is the application of BGA. Okay, algalization मतलब application of BGA is known as alkalization. तो इसका use कहाँ होता है? For the agricultural purpose. So that is the algalization. इस तरीके से की जाती है टैंक और ट्रफ मेथड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बट थोड़ा सा शेड भी प्रोवाइड किया जाता है. सो द कंडीशन इज लाइक डार्क एंड लाइट कंडीशन और शेड एंड लाइट कंडीशन है. लाइक दिस टैंक और ट्रफ इज बिन कंस्ट्रक्टेड ऑफ वी कैन से 2 into 3 centimeter width and 22 centimeter height.
फर्स्टली हमने देखा कि सॉइल ऐड किया जाता है, उसके बाद सुपर फॉस्फेट ऐड किया जाता है, एंड देन वाटर इज बीन पोर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड, स्टार्टर कल्चर इज एडेड, दिस टैंक इज केप्ट इन सनलाइट, BGA डेवलप्ड, वाटर किया जाता है एवरी डे, एंड देन वी गेट द फ्लॉक्स ऑफ दिस flex of this cyanobacteria. This is about the trough or tank method. Second is a peat method. Peat, it is the digging of soil. In this method, under full sunlight, shallow peats are maintained. तो यहाँ पर completely sunlight condition है, and peats are maintained in that sunlight. Peat, it is a hole. ओके हम बोलते हैं से खड्डा खन्ना. ओके सो दैट इज द, या फिर खड्डा, दैट इज नोन एज द पीट. सो शैलो पीट्स आर मेंटेन एंड दैट पीट मस्ट बी अंडर फुल सनलाइट टू अवॉइड द परकोलेशन. पॉलीथीन शीट्स आर लाइंड इनसाइड द पीट. तो पीट को अंदर से कवर किया जाता है थ्रू दी पॉलीथीन शीट्स जस्ट टू अवॉइड द परकोलेशन. आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू cover this peat with the polythene sheets, soil is filled in that peat up to 20 centimeter and it is watered for 10 centimeter height. तो soil add किया जाता है and then you add the water up to 10 centimeter height. Carbofuran and sawdust are added along with the starter culture sprinkling. तो यहाँ पर 3 चीज़ें ऐड की जाती है साइमल्टेनियसली. फर्स्ट इज कार्बोफ्यूरन, सेकेंड इज सॉडस्ट एंड थर्ड इज योर स्टार्टर कल्चर. तो कार्बोफ्यूरन, इट इज यूज्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कार्बोफ्यूरन? इट इज यूज्ड एज अ insecticide and nematocide. Means it kills the insects or it prevents the insect attack and nematodes attack. Sawdust, it acts as a carbon source. It is the dust remain after the wood cutting, that is the sawdust. And starter culture तो हमने previously ही discuss किया है. तो ये तीनों चीज़ें sprinkle की जाती है. And then similarly after the growth of BGA, the dry flakes are collected and packed. So this is simple method of BGA where we use the carbofuran, sawdust एंड स्टार्टर कल्चर. इस तरीके से पीट बनाए जाते हैं ग्रीन हाउस सो दैट डायरेक्टली सनलाइट एंटर ना हो. आफ्टर ड्राइंग द अल्गल मैट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉइल. ड्राई होने के बाद जो BGA की ग्रोथ है वो सेपरेट हो जाएगी सॉइल से एंड इट विल फॉर्म द फ्लेक्स. फ्लेक्स मीन्स इट इज़ लाइक अ सॉलिड स्ट्रक्चर, कोलाइडल लाइक स्ट्रक्चर होता है. And during summer about 1 kg pure algal mat per meter square area is produced. These are collected, ये collect किया जाता है, इनकी powder बनाई जाती है and this is kept in the or stored in the seal polythene bags and then it is supplied to the farmers. और अगर second time करना हो production by this peat method, we can directly use this algal flakes as a starter inoculum and then a process is repeated. So this is about the peat method. तो peat method में हमने क्या देखा? Soil dig की जाती है up to certain depth like a tank type construction ही किया जाता है. To avoid percolation अंदर से polythene bag cover की जाती है and then soil is been spread. After addition of the soil, we add the carbofuran, sawdust and starter culture is sprinkled. Water is been sprinkled and growth of BGA is observed. तो BGA dry किया जाता है, flakes are collected and they are packed. So this is about the second type of method, that is peat method. Third method है, दिस इज ऑल्सो द डायग्राम ऑफ पीट मेथड जो ओपनली किया गया है एज यू कैन सी. और जैसे मैंने आपको बताया था कि डिग किया जाता है और
पॉलीथीन बैग कवर की जाती है. सो दिस ब्लैक कलर यू कैन सी इट इज द पॉलीथीन बैग विच इज कवर्ड फ्रॉम द इनसाइड टू अवॉइड द percolation. लास्ट मेथड इज फील्ड मेथड. अब फील्ड मेथड ये कमर्शियल या फिर बल्क प्रोडक्शन के लिए किया जाता है. इन दिस मेथड वी रिक्वायर एन ओपन एंड मेंटेन फील्ड ऑफ अबाउट 40 स्क्वायर मीटर. तो ओपन फील्ड चाहिए, खुली जगह चाहिए जस्ट टू क्रिएट दिस फील्ड. द प्लॉट, अब वो कंप्लीटली हम प्लॉट यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया biofertilizer. The plot is watered up to 15 centimeter height and 20 kg super phosphate is added to it. तो जो completely हम वो field है वो dig करेंगे and then we will water up to the 15 centimeter height. After watering we will add 20 kg of super phosphate. एज ये कमर्शियल प्रोडक्शन है तो क्वांटिटी एडिशन भी ये इंक्रीज होगा, अमाउंट इंक्रीज होगी. We will maintain certain conditions like pH, temperature, moisture level. After maintaining pH around 7, कार्बोफ्यूरन is added. तो सुपर फॉस्फेट की एडिशन के बाद हम कार्बोफ्यूरन ऐड करेंगे. कार्बोफ्यूरन की एडिशन के बाद हम स्टार्टर कल्चर ऐड करेंगे अबाउट 5 kg and it is frequently watered in about 3 to 4 weeks. BGA डेवलप होता है and soil is allowed to dry. जब सॉइल ड्राई हो जाती है डेफिनेटली वी विल गेट द ब्लू ग्रीन algae flakes and in this method about 30 kg of BGA can be harvested. तो ये है फील्ड मेथड. यू कैन सी कंप्लीटली फील्ड ऑक्यूपाई हो चुका है. यहाँ पर हमने क्या किया है, वी हैव टेकन अ लॉन्ग फील्ड एंड वी हैव वाटर्ड. आफ्टर एडिशन ऑफ द वाटर हमने कार्बोफ्यूरन ऐड किया है. कार्बोफ्यूरन, सुपर फॉस्फेट, उसके बाद स्टार्टर कल्चर ऐड किया है एंड देन वी आर फ्रिक्वेंटली वाटरिंग दैट in about 3 to 4 weeks we will get the BGA. Soil is allowed to dry. After drying of this soil हमें BGA के flakes मिलते हैं. So this is about the production of blue green algae biofertilizer. Now what are advantages of this biofertilizers? अब तक हमने बैक्टीरियल, फंगल, अल्गल इनका प्रोडक्शन देखा, इन्हें हमने समझा what are this biofertilizers. अब इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, we will discuss about that. So advantage, first of all ये बायो है, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं तो इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. ओके, सो इट इज़ द फ्री फ्रॉम ऑल द केमिकल्स, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सस्टेन सॉइल हेल्थ. डेफिनेटली इट मेंटेन्स द सॉइल हेल्थ बिकॉज यहाँ पर हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं. लिटिल अमाउंट ऑफ, अब एडिशन अभी हमने यहाँ पर देखा सुपर फॉस्फेट, एडिशन ऑफ सुपर फॉस्फेट एंड दैट, सो दे आर यूज्ड इन अ माइनर अमाउंट. ओके, बट ये कंप्लीटली हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया हो गया, राइजोबियम हो गए, एज़ोटोबैक्टर हो गए. सो दिस आर द नेचुरल इको फ्रेंडली बायोफर्टिलाइजर्स. दे सस्टेन द सॉइल हेल्थ. These are used as a supplement for chemical fertilizers. They replace 25 to 30% of chemical fertilizers, increases the yield of the crop by 10 to 40%. They decompose the plant residues and maintains the carbon nitrogen ratio. It improves the texture, structure and water holding capacity of the soil and there is no any harmful effect on the plant growth and fertility of the soil. So जब हम biofertilizers use करते हैं definitely it is going to increase the fertility of the soil. अब disadvantages क्या है, biofertilizers require special care for long term storage because they are alive. अब यहाँ पर हम बायो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं तो उनके प्रोडक्शन के समय हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, स्पेशल केयर रखने की ज़रूरत होती है जस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज
And this biofertilizers, it must be used before their expiry date. If it is used after expiry date, it may harm the health of the plant, or it may reduce the fertility of the soil. If other microorganisms contaminate the carrier medium, or if growers use the wrong strain, they are not as effective. तो अगर microorganisms contaminate हो गए during the production, so it may decrease or it may give the bad impact or false impact onto the soil. Biofertilizers lose their effectiveness if soil is too hot or dry. तो अगर सॉइल ये बहुत ही हॉट हो गई है या फिर मॉइस्चर लेवल उसमें नहीं है, तो बायो फर्टिलाइजर्स उनका इफेक्ट ये लूज कर सकते हैं या फिर दे में डिक्रीज देयर इफेक्ट. सो वी हैव टू चूज द or not choose, but we must take care by using the biofertilizers like expiry date से पहले use करें. And there are no that much disadvantages. अगर हम chemical fertilizer से compare करें तो biofertilizer is at the topmost, and it must be definitely used for the agricultural purpose because it has lots of advantages. So this was all about the biofertilizers, bacterial, fungal and algal. I hope you might have understood this lecture. If you have any doubt regarding lecture, you can ask me in comment section. Thank you.